सिलिकॉन न्यूड एक साथ रख चुके हैं। तो आज अपन लोग करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स। मतलब हमारे पास देखिए कितने सारे केमिकल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। देखिए चम्मच है, स्ट्रॉ है, ये गिलास वगैरह भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता है, उनका नाम भैया बता देंगे। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हमें डालना 25 ml वाटर। इसके अंदर तो हम लोग डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया। तो अभी हमें डालना है इसके अंदर फूड कलर्स 2 ड्रॉप्स। One and 2 and the second color is blue color and ये 1 2 हो गया। अभी इन्हें शायद मिक्स करना है। स्ट्रॉ हाँ किससे करना है? इससे स्ट्रॉ कुछ सेकंड के लिए मिक्स करें। ये ग्रीन कलर का बन गया। In the second color इसमें से 1 scoop citric acid, ये यहाँ पे डाल दो कुछ second baking soda, बेकिंग सोडा है ना। baking soda 1 scoop। अभी ये मिक्स करना है ऐसे डाल दो। अभी इनको बंद कर देंगे। मिक्स ये एक्सपेरिमेंट है ना। वो ट्यूब लो ही में एक ये हाँ इसमें 10 ml वाटर डालो। Then add 2 drops of red color. ओके एक सेंड 2 ड्रॉप्स 1 2 Mix with this stick. Add 1 scoop of baking soda. 1 scoop। आप ये 1 scoop. लो आप ही डाल दो। Measure 20 ml cooking oil. हेलो डन। Mix slowly. Then citric acid. This is citric acid. हो गया। And the magic is that did you see bubbles? Yeah. Yes. And the sounds.
Bubbles move slowly in the oil layer. Yes. This property of oil is called viscosity. तो हमें गाइस 15 ml विनेगर डालना है इसमें। 15 ml विनेगर. ओके. नहीं कुछ दीपक पता कर पाओगे एक बार एक भी उसको देखो क्या कर रहा है दबाओ उसको. ये नहीं कमी ना चला पड़ा हो गया, हो गया। 10 ml वो तो एडमिशन का मैंने माता की टीचर्स को पढ़ाई बस हो गया। Now pour it into the test tube. Other this is wet. हो गया. One scoop 1 scoop baking soda. And now the test tube. ये इसको test tube में लगाना है. दूध लेके आओ. हाँ ऐसे कर दो. सहानी भी कह रही है सहानी भी कह रही है तुझे कह रही है वाओ. गुब्बारा फूट गया. मैं हो जाऊंगा फिर देर बाद मेरा का बड़ी बहुत काला ठीक है और क्या Carbon dioxide gas is released. So friends, Share it, subscribe it, like like it. Thank you for watching. अच्छे से बैठते हैं